अब हम एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेते हैं और इसमें हमने आई नॉट की वैल्यू निकालनी है। फाइंड आई नॉट यूजिंग मैश एनालिसिस। बुक में उन्होंने लूप्स तीनों मैश को कंसिडर किया है। हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इस तरीके से मैशेस लें कि कोई भी कंपोनेंट्स मिस ना हो। सपोज फॉर एग्जांपल पहला मैश हम इस तरीके से लेते हैं, दूसरा मैश या दूसरा लूप हम इस तरीके से ले लेते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, और तीसरा हम बाहर आउटर लूप कंसिडर कर लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या वही रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास कि नहीं जो ऑलरेडी बुक में आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मैश 1। इसके लिए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। केवीएल इक्वेशन कैसे होगी? -16 प्लस 4 में से I1 भी पास कर रहा है, I2 भी पास कर रहा है, लेकिन I3 पास नहीं कर रहा है क्योंकि I3 बाहर से जा रहा है। ठीक है, प्लस 2 अब इस 2 हम के से सिर्फ I1 पास कर रहा है, I2 बाहर से जा रहा है, इसलिए यहाँ से सिर्फ I1 पास करेगा, इज इक्वल टू 0। सो I1 4 + 2 is 6, I1 + 4 I2 इज इक्वल टू 16। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3I1 + 2I2 इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 1। सो अगर हम लूप 2 कंसिडर करें तो -16 + 4 I1 + I2 दोनों इसमें से पास कर रहे हैं, I1 और I2 दोनों इसमें से पास कर रहे हैं, प्लस 8 I2 इसमें सिर्फ I2 पास कर रहा है, माइनस ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू है 10I0 और यही कंपोनेंट्स हैं इज इक्वल टू 0। और दिस इज़ अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। I1 4 I1 and I2 4 + 8 is 12 I2 and that is equal to 10 I0 + 16। So this is our equation number 2। इसको हम मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2I1 + 6I2 is equal to 5I0 + 8। This is equation 2। Our mesh current I3 is the only current passing through 6 ohm resistance and I0 is the current passing through 6-3. So let's consider I0 is equal to I3 in this equation. So 2I1 + 6I2, let's bring it on left hand side, -5I3 is equal to 8. This is our updated equation number 2. Now let's make equation for loop 3. So let's start from -16, then plus 6I3, then minus 10I0 is equal to 0, and we know that I0 is equal to I3. So -16 + 6I3 minus 10I3 is equal to 0. So then we have minus 4I3 is equal to 16 and I3 is equal to 16 by 4. 2
this is 4 ampere with negative sign. This is I3 is equal to minus 4 ampere, and we know that I naught is equal to I3, so I naught is equal to minus 4 ampere. And the same results we get in text problem 3.6, and that this is the answer.